Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our Candid conversation series, a research-based web series to explore the gendered impact of COVID-19 in Pakistan. Brought to you by Nur Center for Research and Policy in collaboration with Fatima Memorial Hospital, Lahore. I'm Saman Tariq, Manager Communication for Nur Center for Research and Policy. And tonight in episode 2, we're going to discuss the impact of COVID-19 on maternal mental health. Our moderator for tonight is Mehr Husain. She's a writer and entrepreneur based in Lahore. Thank you, Mehr, for moderating this episode. Assalamu alaikum. Welcome to the Nur Center for Research and Policy COVID-19 series. Today with me, Mehr Husain, I have here with me Farah Tiwana. Farah is a clinical psychologist at Fatima Memorial Hospital. She has 6 years of experience in mental health in Pakistan, working with personal problems, personality disorders, and pre- and postnatal concerns. We also have here Dr. Farhat Al-Ain. Dr. Farhat Al-Ain is an associate professor, gynecologist, and obstetrician at Fatima Memorial Hospital. And our third panelist is Humna Safdar. Humna is working as manager of project portfolio in the technical services department at Nur Center for Research and Policy. She has been associated with NCRP for the past 6 years. According to a study, women that are pregnant are in isolation reported they were facing severe depression. Women in the first trimester were reported to be facing more severe anxiety and depression attacks. In summary, among pregnant women, more than half of the respondents rated the psychological impact of the COVID-19 outbreak as severe, and about 2/3 reported higher than normal anxiety. Almost half of the women reported high anxiety regarding the vertical transmission of the disease. Psychological impact of anxiety of the COVID-19 epidemic seems to be more severe in women who are in the first trimester of pregnancy during the outbreak. According to a WHO report, World Health Organization report, worldwide, about 10% of pregnant women and 13% of women who have just given birth experience a mental disorder, primarily depression. In developing countries, this is even higher. For example, 15.6% during pregnancy and 19.8% after childbirth. The impact of this pandemic on maternal mental health has not yet been properly evaluated. New mothers and newborns will be greeted by harsh realities, including global containment measures such as lockdown and curfews, health centers overwhelmed with response efforts. Therefore, to all the panelists here today, I would like to ask you, what are the possible repercussions of COVID-19 on maternal mental health in your experience? Farah, let's start with you. Okay, hi. Thank you, Mehr. So like you said, there has been research demonstrating that already pregnancy, while for most women it's a very joyous time, there are stressors associated with it, and it does have an impact on mental health. You know, there's postnatal depression, there's also antenatal and perinatal depression and anxiety. So women do go through a lot emotionally during this time. With COVID-19, in my experience as a clinical psychologist with the clients that I'm working with, what I'm seeing is that young women who are of childbearing age, who have either recently become pregnant, who are planning to have a child, or who have children, for all of them, the symptoms that they were experiencing already, because they were quarantining, social distancing measures, all of that has impacted them. And it seems that mostly it's that they're more irritable, there are higher levels of anxiety and stress, professional burnout. So a lot of sort of impact on them mentally in terms of high levels of stress. So being an obstetrician, I have encountered, or I'm in running clinics, so I'm seeing both the antenatal and postnatal cases. So just like she's mentioned that she has seen more of anxiety and stress, and my observation says that the anxiety and stress is much more during the antenatal period.
However, I have also seen women going into depression after delivery. But you know that postpartum depression, postpartum period itself is a risk factor for having depression. On the top of that, having COVID-19 is actually the one that is increasing the peak of depression, prolonging the duration of depression, as well as increasing the frequency among the patients as well. Humna, we have heard from Dr. Farhat and we've heard from Farah as well. I would love to know your thoughts on what are the possible repercussions of COVID-19 on maternal mental health in your experience, considering that you are an expecting mother who who was infected by COVID. Exactly. Yes, Meher, I would like to share my personal experience. सबसे पहले तो यही Please do. कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो आई वाज इन माय थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और मेरी प्रेगनेंसीज वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होती हैं, हाइपर एमेसिस होता है मुझे, एक्सट्रीम वॉमिटिंग, एक्सट्रीम नोजिया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो जब मुझे जिस वक्त कोविड होने से पहले भी आई वाज इन वेरी बैड शेप, आई वाज डाउन ऑल द टाइम, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मूड ख़राब रहता था लॉकडाउन की वजह से भी एंड सब कुछ, एंड देन आई केम टू नो देन आई एम कोविड पॉजिटिव। उसके बाद तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। वही आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये आगे होने क्या वाला है, ये होगा क्या, ये कैसे हो गया, एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रेडी एट ऑल बिकॉज वी वर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, माय फैमिली वाज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, हम सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया, हाउ कम आई एम कोविड पॉजिटिव। तो आई ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज बिकॉज वो प्रेगनेंसी की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही था ब्रीदिंग का। एंड देन सडनली जब और जिन दिनों पता चला है, लाइक मुझे सिम्टम्स शुरू हुए, मेरे फर्स्ट सिम्टम्स में यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो रही थी, अदर देन द फीवर, बैड बॉडी एक्स, और जो बाकी सिम्टम्स थे, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, सब चीज़ें। एंड उसके बाद से तो मुझे जब फर्स्ट डे था, जब प्रॉपर मैंने आइसोलेशन में मैं गई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहा था दैट ऑल आई कुड थिंक ऑफ दैट आई एम गोइंग टू डाई। बस ये मेरे आखिरी टाइम चल रहा है। या इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मुझे बार बार यही हो रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, बात नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड वो सिर्फ मुझे ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो एंड यस आई वाज क्राइंग अ लॉट। Yes, it was terrible, and the bad And thing was mentally, it must have been so traumatic. it. Yes, of course, and then वही questions मेरे mind में बार बार आ रहे थे कि is it going to affect my baby? होने क्या वाला है, बेबी के साथ क्या होगा, उसकी ग्रोथ के इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे, ये सब आगे कैसे होगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। आई ऑलरेडी हैव अ बेबी, मेरा फर्स्ट बॉर्न, शी इज 2 years old माशाल्लाह। तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ थी, एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग दैट मुझे लिटरली आई वाज क्राइंग। और फिर सबसे बड़ी बात, देयर वाज नोबडी अराउंड। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि मैं इतनी अकेली हूँ कि कोई भी पास ना हो, और सबसे ज़्यादा चीज़ ही मुझे ये हिट करी थी कि मेरे पास कोई भी नहीं था। आई हैड एक्सट्रीम बॉडी एक्स, और मुझसे उठ के वॉशरूम तक नहीं जाया जाता था, एंड देयर वाज नोबडी एटलीस्ट कि कोई पास हो। मुझे सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए 20 मिनट लगते थे, एंड दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। एंड देन यस, और उसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज, जो बार बार सांस का इतना मसला, और वही और फिर जो second biggest problem I faced was from my gynecologist. I am being treated at a very good private medical hospital, at least one of the best hospitals in Lahore. But problem ये था कि मैं उनसे मेरा contact नहीं हो रहा था। मैंने उनको बताया अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि इस तरह से आई एम कोविड पॉजिटिव, बट मुझे उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ये सिचुएशंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए, ये आगे होने वाला है, या बेबी के साथ क्या होगा, बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट। और एक नॉर्मल सिचुएशन होती तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, ऑलरेडी हाइपरेमेसिस, ऑलरेडी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो उसमें जो एक ये सिचुएशन थी, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए थी, और उस टाइम में दैट वाज लैकिंग। ऑफ कोर्स वो उनके अपने वो दे वर नॉट कोविड स्पेशलिस्ट, या फिर वो मुझे उस तरह से दे वर नॉट साइकोलॉजिस्ट कि वो मुझे बैठ के काउंसलिंग करती, बट कुछ उनकी तरफ से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे और फिर मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकती थी। ऑफ कोर्स द मोमेंट दे केम टू नो, आई आस्क्ड देम कि शुड आई कम, बिकॉज मुझे ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट दे सेड कि नहीं, अभी नहीं, अगर सैचुरेशन लेवल आपका 94 से ड्रॉप करता है तब आपने आना, नहीं तो उससे पहले यू हैव टू स्टे एट योर प्लेस। तो उसके अलावा मुझे
काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत थी, बिकॉज़ मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ बिल्कुल। रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस टाइम पे भी माय प्रीवियस बॉस, माय कोलीग, शी रियली हेल्प मी, शी इज़ अ डॉक्टर माशाल्लाह, एमबीबीएस डॉक्टर। उनको मेरी कंडीशन का पता था। आई वाज़ कॉलिंग हर, आई वाज़ क्राइंग अ लॉट एंड देन शी एक्सप्लेन्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अदरवाइज़ मुझे तो बस लग रहा था दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। Of course, I don't know, it was the disease itself, it was the COVID itself, और the trauma, वो सुन के COVID और इतनी precautions देने के बाद उस वक्त 4 महीने से I was home and then एकदम वो मुझे हो गया। एंड ऑलरेडी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ख़राब थी। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे निकलूँगी कैसे, कि मेरी तो तबीयत ऑलरेडी इतनी ख़राब रहती है। ये मैंने जो पढ़ा था या सुना था कि कोविड जो है वो आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करता है। मेरी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी जी इतनी जी। लो थी, मैं ऑलरेडी आई कुड फील दैट आई एम वीक, और इसके बाद से तो फिर वो एक्सट्रीम कंडीशन मेरी हो गई ना। बट वही बात थी सही। कि वन ऑफ माय कॉलीग्स शी रियली हेल्प मी, और उन्होंने मुझे फिर अपने उनका जो नेटवर्क डॉक्टर्स का नेटवर्क था उनसे पूछ के वो मुझे चीज़ें बताती थी, वो एक्सप्लेन करती थी, एंड उससे फिर थोड़ा सा मैं बेहतर होना शुरू हुई। बट द ब्रीदिंग इशू दैट वाज रियली बैड, तो वो बस मुझे उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था। प्लस ये कि मुझे समझ नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है, अब आगे क्या होगा। बट शी रियली हेल्प मी, दैट कोलीग, वो उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई। अदरवाइज मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं बताई, जो कि मुझे थोड़ा लाइक आई डोंट नो, शायद मैं उस वक्त ज़्यादा या अभी भी थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा हो गई थी। बट मुझे आई वाज कॉलिंग देम अगेन एंड अगेन कि मुझे नहीं, बताएं। लेकिन हाँ, बिल्कुल। आई मीन आई फाइंड इट appalling that आपको इतनी मेंटल एंजाइटी थी एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट आपकी कोई मदद नहीं कर पाए, आई which डोंट नो, brings क्या ये उनकी डोमेन में नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट कोविड स्पेशलिस्ट, या अब मुझे नहीं पता मेडिकली उसका क्या इम्पैक्ट, मतलब वो क्या उनको क्या करना चाहिए था। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो बताएं कि मुझे क्या मेडिकेशन लेनी है, मुझे क्या करना है, बिकॉज आई नो उसकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं थी। वही जिसने भी बताया बिल्कुल बाद में, वही पैनाडोल एंड देन एजोमैक्स, वही 4-5 चीजें, स्टीम लो, ये करो वो करो, बट मुझे बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं मिला। बिकॉज ये सब चीजें मुझे बाकी लोग बता रहे थे, माई फैमिली वॉज अराउंड, बट एक स्पेशलिस्ट से वो बात पता चलना, या उनकी तरफ से जो मुझे कोई कंसोल करता, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लस अगर वो नहीं कर सकते थे तो वो मुझे किसी से कनेक्ट कर देते, मुझे बता देती, बिकॉज आई वाज रिलाइंग ऑन हर नहीं। ऑलरेडी। बिल्कुल मेरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बिकॉज बिल्कुल। ऑलरेडी मैं एक दफ़ा वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है उस हॉस्पिटल में। तो वो मुझे किसी से कनेक्ट कर एंड देते, इट्स या किसी, आई केप्ट टेलिंग हर, आई मैसेज हर कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी है, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल कंडीशन बहुत बुरी है। मुझे लिटरली इतना कभी एंजाइटी फील नहीं हुई, मैं कभी इतना परेशान नहीं हुई ज़िंदगी में जितना मैं अब एकदम हो गई हूँ। और लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बॉडी के लिए क्या करना है, मुझे बेबी के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, मुझे मेरे बेबी को अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हाँ सारे जी। क्वेश्चंस थे जो दे वर माइंड बॉगलिंग, और वो मुझे सब चल रहे थे, बट आई डिडंट हैव आंसर्स। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन थी। बट गुज़र गया टाइम एंड थैंक गॉड आई केम आउट ऑफ इट अलाइव। So, but otherwise, I was thinking this is my last time, because the worst breathing issue, because the worst body aches, and the worst episodes of hyperemesis, worst episodes of vomiting, सब कुछ अपने पीक पे था। एंड थैंक गॉड के हो गया। बट उस टाइम में ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा मैं मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली मैं बेहतर होती तो मैं अच्छे तरीके से चीज़ें फेस कर पाती। पर आई डोंट नो मैं क्यों नहीं साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग थी, या क्या वजह थी, या इतना एक प्रेशर इतना था, ट्रॉमा इतना था कि कोविड है, लोग मर जाते हैं, सांस का इशू होता है, आप वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हो, और वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, और पता नहीं क्या 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 चीज़ें। सो ये सब चीज़ें ऐड बिल्कुल होके मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग बिल्कुल। फीलिंग। एंड देन जब आई एम थोड़ी वेरी सॉरी हमना, आपको ये सारा एक्सपीरियंस करना पड़ा। इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। फरा, आपने हमना का एक्सपीरियंस सुना है, तो आप हमें बताएं फरा, डू यू फेयर an increase in postpartum mood and anxiety disorders in Pakistan, and what do you think is the way forward considering the circumstances? I mean, ये फरा की कहानी सुन के तो सॉरी हमना की कहानी सुन के मुझे खुद एंजाइटी फील हो रही थी। तो आपको क्या लगता है फरा, what is the way forward? Well, thank you for that question, Mehr, because when I was listening to Humna's story also, I could feel the anxiety that she had gone through. You know, I could really sense Absolutely. it from her body language and see that it has been quite a traumatizing event for her. And she I still do, feels it. I mean, she was crying right absolutely. now. Yeah, And Hamna, and I really hope that you're in a
better mental state now. Quite better, Allah ka shukr hai, but that time all I could think of crying and I'm so waiting. sorry you did not get the support you deserve. I truly am very sorry. But maybe Farah can shed some light. Sure. So, again, when I was listening to Humna, the sense when she said that, "Pata nahi main kyun us waqt psychologically itni strong nahi thi," and that really made me think. This No, is a very abnormal, unusual situation that the whole world is going through. And as an expectant mother, it's quite natural that you were already worried. Like you said, you have hyperemesis also. So it's not easy to go through that. And then also to have COVID with, knowing that right now people don't have that much knowledge about COVID in humans and how it affects us. So it's very natural that you had that stress and you had that worry. And it's a normal response in this abnormal situation. As Mehr asked me right now, do I fear an increase? I do believe there will be an increase. There are already research studies coming in showing that there has been an increase. So just last month, a study was published in Canada showing in a group of 900 expectant mothers and new mothers that pre-pandemic, the rates of depression were about 15%. And post-pandemic, they rose to about 40%. So a 25% increase in depression. Yeah, and that's quite a large number. That's a 25 large might number, sound yeah. small, but it's a big number in actual numbers. And similarly, anxiety was even higher. We went from rates in about 29% to 72%. So I think that's about a 42% increase in severe anxiety in women. Oh my So you can goodness. imagine how much that affects a person. It's very debilitating. When you're anxious and you're depressed, it really takes away from your energy and your ability to cope in your day-to-day life. So it has quite an impact on women and on the children and their care, on the family environment. All of these things are affecting it. And really, it is something for us to keep an eye out on, because ever since this pandemic started, psychologists and psychiatrists have been warning that the next thing is a mental health pandemic, that this will have quite a large impact on people's mental health in general, but more specifically also women's mental health, and within women, the group of expectant mothers. This is a vulnerable group for us to keep in mind, and it's important. Like, I really like that you asked what is the way forward, because when we acknowledge the problem, it doesn't help to just dwell on it. We need to think about possible solutions and where we can go next. So, again, the way forward, the exciting thing is, again, that lots of people are doing research on this as we go along. So the same study I just mentioned, they found that women who were exercising at least 2.5 hours per week had much lower levels of depression and anxiety. And I understand how hard it is for some women running the house, looking after the children, managing everything, to take out time for exercise. But this is one of the most natural and most effective treatments for depression and anxiety. There are no side effects like any medication. It doesn't cost anything as opposed to, going for therapies. You can even do it in your own house, in your own space, find a room for yourself. Any form of moderate intensity exercise can really reduce these symptoms. And another thing that was interesting was, I think Dr. Farhat mentioned it earlier, and maybe someone, I'm not sure, but anyway, so we did discuss about having me time, going to work and getting that me time on the way to work. That's definitely a protective factor. So even in this current situation, taking out time, whether in the morning or at night, whenever it's possible during the day, even if it's 20 minutes, just taking out time for yourself, setting that boundary, be there with your family, do all your responsibilities, take care of your chores. That's very much, you do need to do that. But take out time for yourself too, and time to do things you enjoy doing. Because really this pandemic has turned people's lifestyles upside down, so it's all about taking back as much control as we can in this way and trying to have a healthy, structured routine. That's very true. हमना आपने एक बड़ी अहम बात की थी कि जब आप पे ये सारी ज़हनी तौर पे आप परेशान थी, आपको अपने बच्चे की फिक्र थी कि बच्चे पे क्या असर होएगा, और वो खौफ जो हर औरत के दिमाग में आता है, चाहे वो खुशी में
बच्चा कंसीव हुआ है या क्या कहते हैं in sadder circumstances the child has been conceived, there's always the fear. एक एक डर सा होता है कि कहीं टर्मिनेट ना करनी पड़ जाए, कहीं miscarriage ना हो जाए. And the risk of miscarriage associated with COVID-19 remains unclear. But these uncertainties are likely to add to psychological stress, as you've experienced, Humna, and may even lead to increased rates of pregnancy terminations. So, Dr. Farhat, I would like to ask you, what potential intervention could be done for all pregnant and postpartum women to improve or maintain mental health during this extremely stressful period where access to diagnosis and treatment is not just challenging, but after hearing Humna's story, it's almost impossible? Um, I think so. हम इसको अगर redefine कर लें by identifying the risk factors, ठीक है? So हम उसके मुताबिक different strategies को फिर define कर सकेंगे. Let's take Humna's example. Now she belongs to a middle class, ठीक है? And take my words, when it comes to isolation or when it comes to lockdown, the most affected, as our Prime Minister says, is the class which is of low middle class and the middle class. So, very good. These are the ones at least which are at the major risk factors. They are not able to use enough money to go to private hospitals, and they are not even privileged enough to use any acquaintance to get out and go to hospitals. Okay? So these are the people class hai jisko hame target karna hoga. Okay? How we should target them? For example, in Humna's case, in Pakistan, telemedicine itni zyada popular nahi hai ya commonly used nahi hai. But the COVID proved telemedicine is something जो कि difficult situations में बहुत सारी चीजों को handle करने में मदद करती है. So if an obstetrician would have taken a video call or would have started a telemedicine as a precaution, as a पहले ही, ठीक है, as a first step, so Humna का शायद satisfaction rate, which is in unsatisfactory, for example, अगर Likert scale पे जाएं तो अगर 1 unsatisfactory, she's falling on 2, 3 out of 10, so वो शायद 7, 8 पे fall करता. So this is something जो कि telehealth होती है. Now coming to, अगर हम इसी में से Humna belongs to a good class, I mean like अच्छी middle class से belong करती है. How about those जो कि बिल्कुल low class है? They can't use telemedicine. For those, actually obstetricians should engage those lady health visitors जो उनकी psyche से play करते हैं. So ideally, a country like Pakistan should have taken all these precautionary steps. Number one, catering the middle and the high class to telemedicine, catering the lower socioeconomic class through involving those lady health visitors. See? So, इनका एक number one, during antenatal, अगर उनको train कर दिया जाए obstetrician prevention के ऊपर, ठीक, and या symptoms के ऊपर इसको information दे देती, ठीक, या अगर वो खुद से बहुत सारा time spend करके नहीं कर सकती थी, information leaflet draft कर लेती, किया जा सकता है, ठीक है. I'm not targeting that particular obstetrician, and when I use the word Humna's obstetrician, I means the whole lot of obstetricians of Pakistan. ठीक. So this is something which यहाँ आप links provide कर देते हैं. Go through these symptoms, ठीक. Watch yourself. And then I vouch, as Dr. Farah said, कि walking certain kilometers brain में endorphins release करते हैं. I know walking during this time period is really difficult. Going out and having a walk or having a 2 canal, 3 canal house is not everybody's, I mean, like domain. Of course not. Absolutely. So, us surat mein, what I did was that I started asking my patients to go and do gardening. Even if you have 3 pots of plant, go ahead. And unki, I mean, like plant something. Thing jo hoti hai, I believe, I do not know, Farah will be able to make a better comment. It's actually the one that relates you to nature. A little bit of example, go plant something.
5 minutes दिन में 3 दफा इस humid weather में बेशक walk कर लो. That would give you a better feeling. At least वो brain में थोड़े बहुत endorphins तो release करेंगी. Then don't take your household work as your duty. Start enjoying it. ठीक. So these are the things जो कि आप physical activity में कर देते हो. Number two, जो important चीज है जो कि I think so Dr. Farah की better domain है, जो मेरे patients में बहुत सारी anxiety थी. I emailed them or WhatsApp them the anxiety and the depression scales. वो उसमें अपने आप को खुद rate कर लेते हैं. And then this is something फिर आप easy referral दे देते हैं to a psychologist and a psychiatrist. So these are the things जो कि आपको awareness create करने में, prevention करने में and overcome करने में helpful होते हैं. So these are the simple strategies that one should use. Absolutely. Absolutely. As it is, the Ministry of Human Rights, Pakistan, and UN Women published a comprehensive report on the gendered impact and implications of COVID-19 in Pakistan. While the report highlights that in Pakistan, only 55% of women have access to adequate healthcare, there is no classified data on mental health. Humna, I would like to ask you, how can research organizations in Pakistan play a part in addressing mental health in the future? Aksar, I feel कि there's a stigma around mental health, कि बात नहीं करना, किसी को बताना नहीं है. Exactly. तो आपने इतनी परेशानी आई और हमारा मुल्क जो है is obsessed with marriage and children, the encouragement of children, but there's very little awareness on mental health. So Humna, aap as somebody, as someone who has suffered so much by being pregnant and contracting COVID, Right. raise mental awareness, mental health awareness. Right, Mehr, I am a part of a research organization, or I suggested them and I still want to suggest them that there should be more research on this. Of course, a pandemic, the whole world is affected. It is new for the whole world. So we need to carry out a lot of research जो add कर सके. मतलब यही बात है जैसे डॉक्टर फरहत ने बताया कि even I didn't ask my gynecologist to sit by me every time या मुझसे वीडियो कॉल करके मुझे चीजें बताती, बट अगर कुछ लिटरेचर भी मेरे साथ शेयर कर देती या कुछ चीजें कोई भी like I could read, I had a lot of time and I love reading, तो मैं बैठ के अब मुझे यही था मैं I went to the Google a lot कि क्या होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कोविड हो जाए तो क्या होता है, बेबी पे क्या इम्पैक्ट होता है, बट कोई कुछ रिलायबल सोर्स नहीं था. इवन विद द WHO उनका एक टाइम पे एक रिसर्च स्टडी आ रही है, फिर दूसरे टाइम पे दे आर प्रेडिक्टिंग समथिंग एल्स. दे वर सो ऑब्सक्योर. तो कुछ दे शुड बी रिसर्च, कोई पैम्फलेट्स बने, कोई चीजें बने जो ठीक है अगर डॉक्टर हर किसी को एक्सेस नहीं कर सकते, हर कोविड पेशेंट के साथ बैठ के उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते या उसको बता नहीं सकते, बट एटलीस्ट जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ने के लिए तो चीजें दे सकते हैं. दे शुड बी पब्लिकेशंस. और मुझे यही होता था कि देयर वाज नो रिलायबल सोर्स. एक जगह पे मैं पढ़ी थी कि बिल्कुल बेबी पे इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोविड बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बट एक जगह पे लिखा था देयर वर चांसेस कि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. एंड एक जगह पे लिखा था कि नहीं, यू हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए, बिकॉज बेबी के लिए प्रॉब्लम, अगर आपको ब्रीदिंग इशू हो रहा है दैट मीन्स द बेबी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती मेरे लिए तो शायद इतना मसला ना होता. अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती ऑनेस्टली तो फिर मैं इतना परेशान ना होती, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी और इतने क्वेश्चंस थे जो ऑफ कोर्स आप अपने लिए तो फोरगो कर देते हो, बट जब आपको पता है यू प्रेग्नेंट, यू हैव अ बेबी, आपका बच्चा स्टेक पे है, तो फिर आप लिटरली आप पागल हो जाते हो. सो येस, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशंस हो, लिटरेचर हो, सोशल मीडिया जैसे अब हम ये कर रहे हैं, दीज वेबिनार्स आर सो गुड. इसी तरह की और चीजें हो जिससे अवेयरनेस फैले और पता चले कि क्या चीजें हैं. वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का ना होना या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का ना होना, वो अपने आप में कितनी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देता है. इसीलिए मैं अपने डॉक्टर का ओपिनियन इतना ज्यादा मांग रही थी, बिकॉज बाकी मुझे हर जगह से चीजें पता चल रही थी, सब बता रहे थे ये मेडिकेशन ले लो, माई फैमिली, रिलेटिव्स,
लेकिन मेरी अपनी डॉक्टर जो थी, आई वाज रिलाइंग ऑन हर कि उनकी तरफ से जो चीज़ आती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, वो उनकी तरफ से जो चीज़ डॉक्टर मुझे बताएगी वो बिल्कुल ठीक होगी। तो इसलिए आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम हर कि बेबी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, या बेबी पे इम्पैक्ट होगा, या मुझे ये चीज़ें करवानी चाहिए, ये टेस्ट करवाने चाहिए, ये चीज़ें जो भी प्रोसीजर था अगर उनकी तरफ से एक्सप्लेन हो जाता या किसी ऑथेंटिक सोर्स से मुझे मिल जाता तो शायद मेरे लिए ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस ना होता। तो यस, एज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ रिसर्च इसी चीज़ पे भी कि किस तरह से एक स्ट्रेस होता है, बिकॉज़ मेरे लिए भी इट वाज़ इन द डिज़ीज़ इटसेल्फ, उस डिज़ीज़ का आई डोंट नो जो भी उसके फिज़िकल इम्पैक्ट से उससे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, वो मेरे लिए ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था या मेरे लिए परेशान-कुन था कि ये होना क्या है? अब ये क्या होगा? अगर ये हो गया है तो ये किस सेवेरिटी का है? अगर इतने सिम्पटम्स हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर इतने दिन तक फीवर रहता है तो क्या होगा? मतलब वो सब आंसर्स मुझे मिल जाते तो शायद मैं थोड़ा रिलैक्स होके इस सारे पीरियड को फेस कर लेती। Right, right. Thank you, Humna. I would like to put this question out to all our panelists. So, Dr. Farhat, we'll start with you. Okay, in the end, what are your recommendations? What additional measures should be taken for better maternal mental health care in future, considering the long-term implications of COVID? I'll vouch Dr. Farah said. Now it's time for mental pandemic, kind mental health pandemic ka time aa gaya. And ye log usse, I think so, a year or two fight karte rahenge. See? So that I means agree. maternal जो component है उसको gel करना पड़ेगा psychologist or psychiatrist के साथ. So how about having some sort of a telehealth service plan जिसमें दोनों combined offer जो करें services. ठीक, and rest भी चीजें होनी चाहिए. इसमें आप prevention discuss करें, इसमें आप education दें patients को regarding symptoms, and वो अपनी self assessment करें on anxiety and mood disorders के ऊपर, and whenever they think कि वो high risk हो गए हैं, and वो फिर खुद ही psychologist से फिर आगे further collaborate कर लें. Right, right. Farah, I'd like to hear your thoughts, please. Sure, thanks, Mehr. So as Dr. Farhat very rightly said, now is the time for us to bring together mental health services with other general healthcare services. I really believe that at this time, what we should be encouraging is clinical psychologists, but also the training of health psychologists. Health psychologists are psychologists who are specifically trained in working with healthcare conditions in hospitals. And I feel that there is no more relevant time for that field than right now. I also believe that we need to really address the stigma around mental health. So there is a lot of shame, and I feel that people need to know that it is worse to suffer in silence than it is to face that challenge of, seeking out professional help. At such times, you don't always have to take medication. I know some people are apprehensive about taking medications, but they can also just speak to a psychologist, a counselor, a psychotherapist, anyone to just really help them by talking to them, helping them understand their emotions, connecting with their feelings, and coping. I feel that is also something we need to look out for, destigmatizing mental health so that people aren't ashamed to seek help, and that people are willing to take that step to approach a professional. I believe that in the long term, we really need to keep in mind that this is a long-term issue. Exactly like you said, that our lifestyles have probably changed for another few years. So this is something for us to think about, that this is not something that's going to go away in a month or so, but that we need to adapt to this, so even with the changed lifestyle, with our changed situations, how best can we cope for ourselves? So like I mentioned earlier, in terms of setting boundaries, taking time for yourself, staying socially connected via social media, that's a big thing because people are missing out on connecting socially with colleagues or with friends. So this is a good way to keep in touch, to ensure that they're able to do the things they do, like Dr. Farhat very rightly said, to take on their chores and try and make them fun. So it's enjoyable to do the things that you have to do, and also take up something that you enjoy for yourself in your time. Really just taking time to find those solutions, find the positivity even in this adversity. Of course. And I feel that it takes, it's a societal effort
that will really destigmatize the conversation around mental health and implement all the recommendations that Dr. Farhat, that Dr. Farah and Humna have suggested. Because more often than not, it's a case of the individual taking on society when it comes to mental health. And I genuinely believe that if more people come forward, such as Humna, who I find incredibly brave. Thank you, Humna, for sharing your story and being so open about it. I only hope that more women are inspired by you and they come forth and share their experiences as well. There's no shame in suffering. In fact, I feel that if we suffer and we share our stories, it makes us more human. And it enables doctors such as Dr. Farhat and Dr. Farah to better understand us as patients, and recommendations necessary that can assist us and aid us towards better mental health, and of course, better maternal health as well. Dr. Farhat, Dr. Farah, Humna, thank you so very much for taking time out for this webinar. I know you have a lot on your plate as doctors, especially during this strange, uncertain time. Humna, as I said, I'm in awe of your bravery. Thank you so much for coming forth and sharing your story. I really, truly hope that others who are watching this, any pregnant women out there watching this, they feel inspired and encouraged by the three of you and seek help, because there's absolutely no shame in it. If anything, it's the most human and it's the right thing to do. Ladies, thank you so very much. Stay safe. Thank you so much, Mehr. Thank you for having us. Thank you.